आपको कुछ सवाल देते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट. ओके. Identify the parent unsaturation and functional group in following. गिव मी सेकंड ना, कल हमने क्या क्या दिया था आपको, वो एक मरतबा देख लेते हैं. चलिए ठीक है. जस्ट सीन 4 ना. ठीक. चलिए. Please.
You have to do all the things, ठीक है? Parent and saturation and functional group, तीनों चीजें करनी है. And I will give you 7, है ना? I will give you 7 minutes, ठीक है? Then you will send me whatever you have done. So Harsha and Martin, can you please turn the videos on? Yes, Harsha and Martin, please turn your videos on. Sir, is my video visible? अच्छा, just a second. थोड़ा सा आज पता नहीं. हाँ, ठीक है, it's fine. Sir, I'm done, but I don't have my phone with me. अच्छा, you're done. Yeah, sir. Okay, fine. So I have how many more minutes? Just 3 more minutes out there. Can you like show me on this thing maybe? Just a second. Give me a minute. 1 second. Acha. I will tell you, okay, when to show. Show me now. Show me now. Show me now. I can't see much, but I will just check the no. The first one, second one, third one, fourth one. You have to retry the parent chain. Okay. You have to retry the parent chain. Okay, Harsha. And
What about others? Tell me. Next page, I guess you have 2 pages, no? For the next one. Yeah, second one, it is fine. Yeah, I think just a second. Let me see. Oh, wait a second. The 7th one is again, I think it's not correct. 7th one. Okay. Otherwise, till you have 3 minutes. Try करें. Recheck the previous ones. Did you get the mistakes, Harsha? Time is over. 50 over. हाँ हर्षा tell me, did you get the mistakes? समझ में आया आपको कैसे होगा क्या गलती है? No, sir. It's fine. And guys, just brace yourself for a bit. I am going to change the background too, so it will be all white. Okay. Okay. Martin, can you please tell me whatever you have done? Martin, can you please send me whatever you have done? Yeah, sending, sir. Taking the phone. Okay. Achha. David Martin, show me your answers. Show me your answer in the screen, please. Yeah, 1 minute, sir. No, just show your answer. No need to send Martin. No need to send, just show me on the screen. Achha, you have only done the functional group. You have not, sure. You have not done parent chain, unsaturation, those things, right? Okay, fine. Okay, got it. No problem. See here. In the first case,
This is our functional group, that is going to be amine, right? Functional group, it is equal to amine. Then the unsaturation. So the unsaturation, tell me, Harsha, what will be the unsaturation? Alkene. Alkene, En, right? Unsaturation will be En. Okay. Now this is the portion which is actually the En part, right? Correct? So yeah. Yes. Can you please keep your mic on, all of you guys, both of you guys? Can you please keep your mic on? Okay. And this portion, if I say, let us suppose we are coloring this. This is my functional group, right? This is my functional group. Now, when we start identifying the parent chain, you have to remember that we have to take the carbon atom, which is containing the functional group. But we have to start from where? We have to start from a terminal carbon, right? There are a few terminal carbons here. We have these, just a second, we have this A terminal carbon. We have this B terminal, this is also terminal carbon, no, last carbon B. And here we have the C terminal carbon, right? Correct? Yes, sir. Now, obviously, we are going to start from C because C is nearest to the functional group 1. And we are going to start with the C. When I will start from here, so I have taken the carbon which was having NH2. Then I will move this way because here only we are having carbon. And obviously, I have to go above because we have the double bond here. You understood it, Harsha? Yes or no? Please tell me. We have to include the double bond also in the parent chain. Yes, sir. Correct. So it will be how many carbons? 1, 2, 3, and 4 carbon atoms, which is bute. Got it? Yes, sir. In this case, we'll start with COOH will be our COOH is going to be our functional group. Then we have to determine the unsaturation. The unsaturation, you just do it the blue color itself, because it is also going to be the part of the parent chain. So functional group, it is COOH. That is why it is going to be oic acid. Unsaturation, it is again En. And if I determine the parent chain, then we'll start with the carbon atom. Here, this 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, and again 4 carbon atoms, right? It is again going to be bute. Now, let us look at the third one. This is my functional group, that is OH. Functional group, it is OH, which is the name for this, the suffix for this is all. And if I look at the unsaturation is obviously a double bond. That is why we are going to write En. And the double bond is here. So I will do it a blue color because I have to keep this in the parent chain. Now I will start from the terminals. Now there are a few terminals here. एक आपके पास terminal ये है. This is A terminal, I can say. This is the B terminal, I can say. And this is the C terminal, right? This is the B and the C. Now B and the C terminal both are same. So it doesn't really matter where you start from, B or C. So, but obviously you have to start from either B or C because B or C is only nearest to OH. You have to start from the terminal carbon, which is nearest to the functional group. So I will start like this from C. Then I have taken the carbon atom, which was having the functional group. And I have went like this. And obviously I've got this double bond already as a blue color. So this is my parent. And if I count the number of carbon atoms here, then the number of carbon atoms here is 1 carbon, 2 carbon. Here it is 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. And this is the 6th carbon atom here. So in this case, our parent, it is going to be a chain of 6 carbon atom, which is actually known as hex, right? Now, whatever is remaining, we are going to deal with it later on, but this is our parent unsaturation and functional. That which we have to cover at least. Okay. Now, then if I look at my next question, functional group, this is my functional group, right? And then if I look at the unsaturation, this is my unsaturation. And I have to start from a particular carbon atom. So obviously I have to start from, there are a few terminals you have to see. You have A terminal, B terminal, and C terminal. So obviously B terminal, it is nearest to the double bond O, right? 1 carbon, 2 carbon. So I'll start from here. And I will go this way.
So in this case, I have got how many carbons? 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, and 5 carbon atoms. Okay, so if I write all the things, we are going to have functional group as own, the unsaturation as En, and the parent as 1, 2, 3, 4, 5, that is pen. And the sixth structure, it was quite easy. This is OH, which is your functional group. The functional group here, it is all, and it is attached with a chain of 6 carbon atoms. So it is actually like this. This whole things are carbon atoms. Now, unsaturation is, we can see An, there is no double bond or triple bond, and the parent is, here we are having 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4, 5, and 6, but it is a ring. So we have a ring of 6 carbon atoms. So for ring, we write cyclo, and hex is for the 6 carbon atoms. Now, when I look at the sixth carbon, when I look at the sixth structure, this is my functional group that I have to take care of, Cn, and obviously there is no double bond or triple bond. Now, then I have to look for the parent chain. The parent chain, this carbon, it will start from this carbon atom, it will go here, obviously where we have more carbon. So here we have more carbon atoms. So only this much is my parent, okay, 1, 2, and 3, that's it. Now, आप बोलिएगा, sir, if I look at this carbon atom, इसके बाद भी एक carbon है, but this carbon is not part of the chain, it is now a what? It is now a ring. तो chain का part नहीं है, that is why we are not going to take. तो हमारे पास कितने carbon हो जाएंगे? 1, 2, and 3. So in this case, if I write the functional group, it is nitrile. Unsaturation, it is An. Parent, it is just prop. Sorry, हाँ बताएं. Harsha, tell me. So we want to include the ring. No, we cannot include chain और ring को include नहीं कर सकते ना. फिर देखिए आपको एक मसला खड़ा हो जाएगा. If we have ring, then we have to write cyclohex. If we have chain, we don't have to write cyclo. So if we are going to include if we are going to include the ring as well as the chain, the ring and the non-ring part, तो मुश्किल होगा ना नेम करना, right Harsha? There will be a confusion. ठीक है, अगर आप देखिए, मान लीजिए, लेट अस सपोज ना, पहले लोगों ने ट्राई किया ही होगा, ऑब्वियसली बात है, इट्स वेरी नेचुरल एंड वेरी लॉजिकल टू थिंक दैट वे इनिशियली. आई विल स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होगा दैट व्हाट इज दिस, व्हाट शुड आई नेम दिस, राइट? शुड आई, अगर आप ये लिखिएगा साइक्लो 8 कार्बन, तो ऑक लिख दीजिएगा आप. नाउ इट इज अ कंफ्यूजन बिकॉज वी डोंट हैव अ रिंग ऑफ 8 कार्बन एटम्स. बात सही है हर्षा? Yes, sir. That is why we have to make a decision. तो उसमें डिसाइड यही किया गया that we are not going to take the ring, we are going to discard the ring and just take the chain. ठीक है, तो chain से ring नहीं जा सकते और ring से chain में भी नहीं आ सकते. You got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, so either your parent carbon is a ring or it will be a chain. दोनों नहीं हो सकता. Okay. Oh, अच्छा, 7th आपका सही है. My bad, हमने सवाल पूरा नहीं दिया था. I thought that I have a double bond here. ठीक है, if we have this structure, then obviously it is correct. ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया था. So you have this OH, 7th वाला आपका सही है. My bad, आपका इनिशियल वाला थोड़ा सा मिस्टेक था, आपने वो देख लिया होगा. But this one was correct. So OH है आपके पास, and then you have 1, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Then we will go above because we have a triple bond here. And then you have functional group, that is all. Then you have the unsaturation, which is Yn, and the parent, which is 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, and 6 carbon atom. So the 6th carbon atom, which is what, hex. Okay, please write this down. Let me know once you are done. Is everyone done? Martin and Harsha, you will raise your hand once you're done, okay?
The sixth one is propane, right? Prop. हाँ प्रॉप होगा वो हमने एग्जाम्पल में साइक्लो आउट सो ठीक नहीं चलेगा सो बी प्रॉप Martin waiting for you, please write it quickly. That answer. Okay. थोड़ा सा एक छोटा सा सेक्शन लिख लीजिएगा नंबरिंग का ठीक है ना हाउ वी हैव टू नंबर द पेरेंट जीन ठीक है सो विल राइट नंबरिंग ऑफ पेरेंट जीन नंबरिंग ऑफ पेरेंट जीन ठीक है प्लीज राइट numbering of parent starts from that terminal carbon. Please write it with me. Martin, write it with me. Terminal carbon. Numbering of parent starts from that terminal carbon which is nearest to तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये सेम प्रायोरिटी जो पेरेंट चेन के लिए था नंबरिंग के लिए भी भाई विच इज नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप ठीक है एंड इफ यू हैव अ टाई तो फिर डबल बॉन्ड अगेन इफ यू हैव अ टाई देन यू हैव टू लुक एट द ट्रिपल बॉन्ड अगेन इफ यू हैव अ टाई देन यू हैव टू लुक एट द सब्स्टिट्यूएंट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में substituent ठीक है so this is the order that you have to follow अच्छा इसके बाद भी ना if you have any discrepancies then you will follow the alphabetical order ठीक है तो पहली प्रायोरिटी देनी है आपको फंक्शनल ग्रुप पे उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट ये सब्स्टिट्यूएंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये आपको बाद में समझ में आएगा अब वी कैन यूज समथिंग जहां पे सब्स्टिट्यूएंट यूज नहीं होता है आई मीन देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट एंड देन वी कैन नेम इट ओके सो आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस और उसमें हम लोग देखेंगे हाउ आर वी गोइंग टू नेम दीज डिफरेंट कंपाउंड्स लेट मी नो इफ यू आर डन राइटिंग Done, sir. यू आर डन राइटिंग ओके जैसे चलिए आपके पास एक सवाल दे रहे हैं है ना आई विल डू दिस डोंट वरी राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग प्लीज राइट इट विथ मी सवाल कम से कम मेरे साथ लिखो मार्टिन ओके सो लेट अस सपोज वी हैव अ वेरी सिंपल केस जो हम लोग शायद देखा होगा we have a double bond here and we have OH here ठीक है
double bond, and then we have a OH here. अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं what is the functional group. Can both of you please turn your mic on and tell me what is the functional group? OL. हाँ, very good. It is OH. तो इसके लिए OL लिखते हैं, right? The functional group is all. Then what is the unsaturation? Tell me. En. Very good. It is En. Now we have functional group OH, which we write as OL, and then we have a double bond, which we write as En. ठीक है, which we write as En. Then उसके बाद what is the parent, है ना? Parent का बात करें, so obviously this is going to be this double bond is going to be the part of the parent. तो आपके पास parent कुछ इस तरह से आ जाएगा. Now there are only two ways of numbering a parent. ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना? सिर्फ दो ही तरीके हैं पेरेंट को नंबर करने के लिए. Either you go right to left or left to right, है ना? Obviously right to left और left to right तभी होगा जब आपके पास कंपाउंड इस तरह से हो. If the parent is something like this, इस तरह से parent है, तो up to down या फिर down to up इस तरह से होगा, ठीक है? So there are only two ways. तो यहाँ पे देखिए, you can either go 1, 2, 3, 4, or we can go the other way. इस कार्बन को 1 ले ले, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है? Now according to our criteria क्या होना चाहिए? Numbering of the parent starts from that terminal carbon which is nearest to functional group, ठीक है? तो स्टार्ट कहां से होगा? रेड वाला जो स्टार्ट किया that is correct, या फिर ग्रीन वाला जो स्टार्ट किया वो वाला करेक्ट है? बताएं which one is correct? रेड वन और ग्रीन वन? मतलब की बात ये है, you should start numbering दो टर्मिनल कार्बन है ना यहाँ पे. How many terminal carbon we have? Only two, right? This is a terminal A and this is the terminal B. So where should we start the numbering from? A या B? What is nearest to the function? Very good. We should start from B. So वो कौन सा है? That is green numbering, right? So this is the numbering that we are having. ठीक है? A parent is obviously 4 carbon atoms. That is why we have 4 carbon, which is bute. Now, when we are numbering, please listen, all of you, both of you, please listen. When we are numbering, we will number the unsaturation functional group, और अगर subsequent हुआ तो subsequent we are going to number, right? So the unsaturation, if you see the double bond, it is between 3 and 4 carbon. Double bond किस किस कार्बन के बीच में बताएं guys? Double bond is between which carbon? Third and fourth. Third and fourth. तो third and fourth में से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, and whatever is lowest, that number we are going to get. तो हो जाएगा आपके पास 3e. And what about all? This all is on which carbon atom? Second. Second. So this will be 2 all. Now you just need to write the name. Name हो जाएगा आपका bute 3ene 2 all. Isn't it easy? Yes or no? Please tell me, guys. आसान है ना? I hope किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. It's very easy. Bute, बस आपको नीचे से ऊपर चल जाना है बस. Got it? Yes or no? Please tell me. If you can identify, देखिए, when you are having difficulty in nomenclature, so अब आपके पास क्या है? Now you can pinpoint where you are having difficulty. है ना? If you are learning something ना, तो जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बेस्ट थिंग ये हो सकता है कि आप पॉइंट कर पाए कि आपको दिक्कत कहां हो रही, तब आप जल्दी, इफ यू कैन वर्क ऑन इट वेरी क्विकली एंड देन इंप्रूव ऑन वेरी क्विकली. वर्क ऑन इट वेरी क्विकली, इंप्रूव ऑन वेरी क्विकली. दिक्कत बच्चे बोलते हैं कि सर आईपैक नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है, ठीक है ना? देन बाय दिस मेथड व्हाट वी कैन डू, अगर आप सिर्फ सारा आईपैक नॉमेनक्लेचर एक साथ पढ़ लें, है ना, कि ऐसे पेरेंट को नेम करते हैं, ऐसे फंक्शन ग्रुप, मतलब बिल्कुल ऐसे मिक्सअप हो जाए, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पिन पॉइंट कि आपको दिक्कत कहां पे आ रही है, अगर आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं. बट नाउ यू कैन वेरी इजीली, अगर आपने ये पफ लिख दिया है, पेरेंट अनसैचुरेटेड एंड फंक्शनल ग्रुप, और फिर आप देख रहे हैं अच्छा ठीक है हमको दिक्कत पेरेंट में हो रही है, पेरेंट के 4 कार्बन को ब्यूट और का प्रॉप लिख दे रहे हैं, या फिर 4 कार्बन चूज करने में हमारी दिक्कत होगी. सो यू कैन वेरी मच पिन पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द एसपफ मेथड, कि आप अपने मिस्टेक्स को पिन पॉइंट कर देंगे और उसको इंप्रूव जल्दी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड देन हम लोग बढ़ेंगे आगे. ठीक है ना? आई विल गिव यू जस्ट 2 more examples, then we'll start learning about the substituent. देखिए,
Tell me what is the functional group here? In this B structure, tell me guys, what is the functional group? E, sir. क्या है बताएं फिर से हर्षा? E. Very good. It is E, right? बहुत बढ़िया. It is E. That means there is no functional group. That is why we are going to write E. What about the unsaturation? Martin, you don't know the answers. Mic on kar karke, Martin. What about the unsaturation? Yeah, the unsaturation. It's YN. No. Harsha, unsaturation? En, sir. No, it is di-en, right? We have two double bonds, which means we have di-en. Is that correct? Yes or no? Got it? Na? ठीक है. We have di-en. Next we have parent. Parent में obviously we don't have any choice. Simple सा parent है आपके पास. It is this. If you number it, अब कहाँ से number करें? You can either start numbering from the A or the P because दोनों में double bond same ही जगह आ रहा है, right? So we'll start from here. 1, 2, 3, 4, and 5. We have 5 carbon atoms, so we are going to name it pent. When we are going to number the double bonds, so यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा. We have two double bonds, and both of these double bonds are in different places, right? So एक double bond है आपके पास first carbon में, and then you have the second double bond in the fourth carbon atom, right? So we have 1,4 di. Now the name is going to be very easily pent 1,4 di ENE. आसान है हर्षा, yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay, चलिए try this one. C1. ठीक है, I've changed the structure. एक बार देख लीजिएगा. I've changed the structure. Try this one. Okay, let me know once you're done. Answer. Can you show me the answer? अच्छा, आपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, चलिए ठीक है, दैट्स फाइन. आई टोल्ड ना, हमने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था. सी द स्क्रीन. Okay, sir. Do it again. But whatever you have done, I think that is fine. Martin, are you done? No, I'm doing the C.
Is this correct now? A second. Just you don't have to write dash between a and ना, ठीक है? चलिए हम वो बता देंगे आपको, like where you have to put the dash. Numbers and letters are separated with dash, ठीक है? एक तो पॉइंट है, हल्की से उसको लिख ही रहते हैं. Numbers, just want to find numbers and letters are separated by dash. Dash बोले तो this is dash, right? और numbers are separated by numbers. अगर दो नंबर है ना उनको सेपरेट बाय कॉमा. दो नंबर है अगर तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है? सो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स. Numbers are separated by comma. See here, the functional group. Here we have 2 C double bond O. That is for 2 I will write di. For C double bond O I am going to write on. Now, if I look at the unsaturation, then we don't have any double bond or triple bond. And for that, we are going to write AN. And then when I look for parent, I can have to start numbering from the carbon which is nearest to the functional group, that terminal carbon. So start from here, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, and 6 carbon atoms. So parent is 6 carbon atom, which is going to be hex. Now, obviously, if there is no unsaturation, I don't have to number it. So we have a functional group. So we have to number functional group. So dione, it is present in the 2nd and the 4th carbon atom. So we will have 2, 4 dione. The name is going to be hex. In 2, 3 dione. Martin, write this quickly. At 2,4, right? अच्छा हाँ my bad. हमने बोला सही लिख दिया गलत. 2,4. Thank you, Harsha. 2,4 dione. It seems easy for you now, Harsha. Are you at nomenclature at least इतना? Yes. ठीक है. स्कूल में हुआ है आपके अभी या फिर नहीं हुआ है अभी? Yes, sir, done. अच्छा, कैसा लगा था स्कूल में IPAC nomenclature? I didn't understand anything. है ना? I mean, I won't say like वो method ही ऐसा पढ़ाते चले आ रहे हैं लोग ना, that even I was not taught this method. I have to struggle a bit till my BSc days. 11, 12 तो छोड़ ही दी. So till my BSc days, I used to struggle with IPAC nomenclature really heavily. So they started with. That was the basic thing about organic chemistry. Sorry? They started with numbering only. They started with numbering. Yes, sir. No, they were said that time लिखा होगी. The longest carbon chain is the parent chain. Parent chain, main chain, root chain, ऐसा कुछ. Longest carbon chain ऐसा नहीं लिखा था उन्होंने कि आप काउंट करोगे सबसे ज्यादा कार्बन जहां पे होगा उसी को आप पेरेंट. वही था ना, है ना? बट दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. और उस चीज का आपको आई मीन यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया जब वी डिड दिस. लाइक ऑल ऑफ दीज 3 आर आइडेंटिकली लुकिंग कंपाउंड्स, राइट? बहुत आइडेंटिकल है. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कार्बन एटम्स एंड वेयर दे आर सिचुएटेड, if I don't talk about the functional group and the unsaturation, और सिर्फ हम parent की, अगर हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, so all of these structures are same, but it is so much influenced by the double bonds and the functional group, है ना? And I don't know मतलब why it is taught that way still. अभी भी इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है. I used to struggle बोला, मतलब ये हो सकता है कि लोगों को लगा वही सही तरीका है और मतलब आसान तरीका है, but even in NCERT if you see,
वो भी सेम फॉर्मेट में है. There's actually a book by a foreign writer, David Klein. His organic chemistry books are very good. David Klein, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा अभी. I mean, if you want to even for the nomenclature part, he has this method. वहीं से मिल गया था. But in that nomenclature, we have not included all the functional group. They are having a few functional group only. So उसमें थोड़ी सी सीबीएसई के बच्चों को दिक्कत हो जाती है. एक्चुअली बाई फॉरेन ऑथर, तो ये बाहर के स्कूल्स के लिए, बाहर के स्कूल्स के लिए क्या, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है. So the college students who have to do medical science or something related to that, so they have to also take a organic chemistry paper. And that organic chemistry, David Klein deals with. Organic chemistry semester 1 and semester 2. उन्होंने वहां पे बताया. So I like this method very much. फिर उसको थोड़ा सा अपना सीबीएसई के पोर्शन में ढालना पड़ा, but otherwise it is very fine. अब आते हैं हम लोग, लास्ट पोर्शन ये है आपका, that is the naming of substituent की बात करते हैं, ठीक है ना. We are going to talk about the substituent. तो सबसे पहले substituent होता क्या है? What is a substituent? इसका एक बहुत ही आसान से एक डेफिनेशन है. What is a substituent? Substituent is anything that is remaining, anything that is left after the identification of parent, unsaturation and functional group. So whatever remains after the identification of puff के बाद जो भी बच गया, whatever is remaining after puff, it is the substituent. आसान डेफिनेशन, yes or no, please tell me. Yes. ठीक है, देखिए एक हम थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड ले रहे हैं, उसमें we are going to identify what is a substituent, ठीक है ना. So we have 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है. We have a OH group here, we have a NH2 group here, then we have some alkyl group like this, then we have some chlorine here, and we also have a double bond here, ठीक है ना. काफी चीजें हो गई, but obviously we can see that if I talk about the functional group, we have OH as the functional group, and this OH functional group, and then we have a double bond, so this double bond should be there, ठीक है. So we have identified the functional group, which is OH. The name is all, and for unsaturation we have the double bond. The name for this is EN. Now when I start numbering, so I will start the parent chain from the carbon that is nearest to functional, that means this carbon atom, and this, and we will go like this, ठीक है ना. इस तरह से हम लोग जाएंगे. So I have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, and 6 carbon atoms, right? So unsaturation with parent, which is 6 carbon atom, and that is why it is going to be hex, ठीक है. That's it. Now there are many things which are remaining, right? एक तो आपके पास एक बचा ये आपका, this is your NH2, ठीक है. एक तो ये NH2 बचा आपका. उसी तरीके से आप क्या बचा, क्लोरीन बच गया है, right? This is remaining. What else is remaining? There is this particular carbon hydrogen, है ना. एक ये फ्रैगमेंट बचा हुआ है, right? Let me just make this with a different type of box. So we have this remaining, and similarly we are also having this part which is remaining, ठीक है. This part which is remaining. अब अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, so many things are here. If I talk about the box part ना, ये दो हमारे पास जो हैं, these two. Let me use a different color. ये वाले और ये वाले. So this is made up of only hydrocarbons. These are hydrocarbons, right? Hydrocarbons सही. So basically इनको हम बोलते हैं alkyl substituent. क्या बोलते हैं? Alkyl. Alkyl, because if there is hydrocarbon which is attached, उसको alkyl बोला जाता है. And if I talk about these circles one, so these are non-alkyl, है ना. इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? These circle ones. अभी आपको लिखने की जरूरत ये नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना. बस हम एक चीज बताने की, non-alkyl. अच्छा, even in non-alkyl you can see that I have two different categories. NH2, we have seen this, it is from the list of functional group, है ना. सही है, हर्ष याद है आपको? We have seen NH2 functional group भी हो सकता है ना. I mean अगर OH नहीं होता तो ये functional group. So this is from the list of functional group,
एंड दिस इज अ न्यू वन जो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में नहीं है। सो नाउ दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट में ही आपको सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है। इफ देयर इज अ, अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे तब वहां पे दिक्कत होगी, तो दिक्कत नहीं होगी, चलिए ना, ये जैसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए यहाँ पे आपके पास, ठीक है। नाउ दैट मींस यू हैव टू डील विद सब्स्टिट्यूएंट इन टू डिफरेंट वे। सबसे पहले वी विल लुक एट द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। पहले अल्काइल फिर नॉन अल्काइल। तो सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया आपने, आपको ये स्ट्रक्चर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड, आप ऐसे लिखिएगा सब्स्टिट्यूएंट बीच में, you'll write substituent in the middle like this, substituent, substituent will be in two different categories, right? एक है आपके पास alkyl substituent, और दूसरा है आपके पास नॉन alkyl substituent, नॉन alkyl substituent, नॉन alkyl substituent, ठीक है। सो alkyl substituent की खास बात क्या है, इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, contains only carbon and hydrogen, ठीक है। नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन अल्काइल, सिंपली एटम्स, एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन अल्काइल, अदर देन अल्काइल, ठीक है। ठीक है, डन गाइस, राइटिंग लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक, राइट। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। इन दिस नेमिंग ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट the number of carbons in substituent, लिखते जाइए अभी, जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। लिखते जाइए, नंबर, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी सब्स्टिट्यूएंट, जो आपके पास व्हाट एवर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यू आर हैविंग ना, विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सेकंड, प्लीज राइट इट विथ मी, यूज द टर्मिनोलॉजी, use the terminology same as that of parent, just as just add, आपको YL ऐड कर देना है at the end, add YL at the end to show it is substituent, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए, इफ इन द सब्स्टिट्यूएंट द नंबर ऑफ कार्बन दैट वी आर हैविंग, नंबर ऑफ कार्बन, और इसका सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, प्लीज राइट इट विथ मी, ओके। नाउ यू हैव टू आंसर इट आल्सो। इफ आई हैव वन कार्बन एटम, तो वन कार्बन एटम होता है तो पेरेंट में क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द नेम फॉर इट इन द पेरेंट, Lect. मेथ, है ना। मेथ तो लिख देंगे, बट उसी में क्या कर देंगे, YL ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट, मेथ अगर यूज करते हैं तो वो पेरेंट में जाएगा, क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कंफ्यूजन आती। सो टू शो दैट इट इज अ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, विल जस्ट ऐड YL। अब उसी तरह आप लोग 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, 9, चलिए इतना कम से कम लिखिए, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। हम थोड़ी चीज और भी दिखा देते हैं, जैसे एक कार्बन हो ना आपको, तो आपको ME की जैसा शो भी कर सकते हैं,
सेकेंड कार्बन को स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर में ईटी के जैसा शो कर सकते हैं. एंड समटाइम्स 3 कार्बन इज शोन एज PR, 4 कार्बन को BU के जैसा शो कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से हियर यू हैव OH और यहाँ पे आपके पास Me लिख दिया उन्होंने. सो दिस इज अ मीथाइल, राइट. यहाँ पे CH3 है. ओके. अच्छा, इनका हम ना थोड़ा स्ट्रक्चर ही बना देते हैं. स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कहीं कहीं आपको आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं. टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 आपको दिखेगा मिथाइल में. मिथाइल इज गोइंग टू बी CH3, यहीं से कनेक्टेड होगा. एंड इथाइल इज गोइंग टू बी CH2CH3. और एक सेकंड गाइस, आई थिंक आई हैव टू टेक अ बिट मोर स्पेस. बीच में बिल्कुल करना सही नहीं रहेगा. This can also be written as C2H5, and for 3 carbon it will be C3H8. ठीक है, और ये क्या लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH3. ठीक है, and so on. I hope you have understood this now. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, write this down. Let me know once you're done. So for 4, would it be C4H9? नहीं, H9 कैसे होगा? ऐसे देखिए ना, आप ऐसे लिखिए CH2 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 एंड देन लास्ट वाला CH3 होगा. ऐसे होगा ना. तो कितने हो गए बताइए? C4 और H 6. हमने कुछ गलत लिखा है क्या पहले? C3H7 लिखना चाहिए था हमको, माय बैड. दिस शुड बी C3H7 और उसके बाद हाँ फिर H9 हो जाएगा. माय बैड हर्षा, यू आर करेक्ट. 9 है ना भाई? हाँ 6 3 9. यू डोंट हैव टू राइट दिस, ओके हर्षा. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. फाइन, इतने में ही काफी है. मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग सब, बहुत 99% ऑफ द टाइम्स यू विल बी गेटिंग C2H5 एज द सब्सिक्वेंट. दैट्स इट. You done, Harsha? Yes, sir. Can you show me? अच्छा, rather, can you just name it? Leave it. आप बस बताते जाइए हमको ना. I will write it down here. ठीक है. Tell me the substituent. What will be the name for the 2 carbon atoms? Ethyl. Ethyl. Very good. What about Propyl. propyl? Butyl. For 4, butyl. 5, Pentyl. pentyl. Hexyl. Hexyl. Heptyl.
हेप्टाइन, octyl, ऑक्टाइन एंड ब्रोमाइल, bromide. राइट? Yes. दैट्स इट। चलिए, अच्छा, बस एक यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। इफ द alkyl substituent is a ring, then just add cyclo before the name, है ना? I think this is the same strategy that we used for the parent, है ना? तो parent के जैसा बिल्कुल everything is as parent, but बस end में YL लगा देना है आपने, ठीक है? That's it. क्या हर्षा? Yes, sir. अब कुछ सवाल करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव नॉट कंप्लीटेड दी कंप्लीट जो पोर्शन होता है आपका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का। अभी भी वी नो दैट वी हैव दी नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिमेनिंग, वी हैव दी सम अदर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, वो भी अभी बचा हुआ है, बट स्टिल वी कैन नेम अ फ्यू थिंग्स, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक में ही है। अभी ये भी याद रखिएगा, जो ट्रेडिशनल वे है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का पढ़ाने का, ठीक है, उसमें पूरा पढ़ा लीजिए तब भी आपको नेमिंग करने नहीं आती बच्चों को, बट वी हैव नॉट कंप्लीटेड येट, इट स्टिल यू विल बी एबल टू नेम मेनी थिंग्स, ठीक है? बहुत सारे नेम आप कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है? सो लेट अस सी व्हाट वी हैव इन योर टेक्स्ट बुक। आई थिंक 5th चैप्टर है ना, सेकंड बुक का। Sir, हाँ, the बताएं। number of carbons, should we take it like according to the substituent or the main chain? सब्स्टिट्यूएंट के लिए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे ना, विल काउंट इन द सब, वो आ जाएगा। अरे टेंशन ना लीजिए आप, बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए व्हाट इज गिवन इन द रूल, दैट्स इट, ठीक है? चलिए, हाँ, कुछ आपके पास है। No, we have not completed, है ना? We have not completed, हमने कंप्लीट नहीं किया अभी तक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। कैन यू गेस आउट ऑफ दीज A B C D E F, you have 6 structures, right, in your NCERT? कितने स्ट्रक्चर्स का नाम लिख सकते हैं इसमें से हम लोग, by the current information we are having? Tell me, Harsha, approximately. We have not completed, still we will be able to write the crisp, the saaf answer. Any idea? आप बताएं। Step Everything, first one, right? So D and F. DNF, डी भी लिख लीजिएगा, ए बस नहीं लिख पाएंगे हम लोग, बाकी सब लिख लीजिएगा, आप बहुत आराम से लिख लेंगे, ठीक है? चलिए, which one should we start from? What is the toughest? क्या लग रहा है आपको हर्षा? What is the toughest one here? D. D is the toughest, ठीक है? D सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसी को बड़ा कर लेते हैं, मतलब हम लोग दूसरी जगह क्यों ही जाए, whatever has been given to us इसी को लेते हैं, and let us just enlarge it, right? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बताइए क्या सबसे पहले, व्हाट शुड बी राइट? टेल मी। फंक्शनल ग्रुप, राइट? Yes. अच्छा, अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, क्लोरो और ब्रोमो नहीं पढ़ा है ना? चलिए एक सेकंड, ठीक है। ओह, ठीक है, हाँ, ये नेम नहीं कर पाएंगे, वी हैव नॉट डन क्लोरो ब्रोमो। मेरे को लग रहा था क्लोरो ब्रोमो पढ़ लिया है। सो फ्रॉम हियर थोड़ा सा अगर हम लोग और ये कर लेना, एक तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, जस्ट अ सेकंड, तो अल्काइल और जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो हम आपको बता देते हैं। इफ यू हैव एफ, इसको बोलते हैं फ्लोरो। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, अगर आपके पास क्लोरीन हैज अ सब्स्टिट्यूएंट देन वी कॉल इट क्लोरो। इफ यू हैव ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी कॉल इट ब्रोमो। इफ यू हैव आयोडीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी कॉल इट आयोडो, ठीक है? ये तो आपके पास हैलोजेंस हो गया, राइट? इन जनरल हैलोजेंस के लिए कैसे करते हैं? हैलो, राइट?
देन इफ यू हैव NO2 तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, एंड इफ यू हैव OR देन वी कॉल इट एल्कोक्सी। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। मान लीजिए इफ यू हैव OCH3, so instead of al we will have meth oxy. If you have OC2H5, C2H5 is eth, oxygen is there, so eth oxy, eth oxy। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए थोड़ा सा, आई मीन हाफ पेज भी नहीं लगेगा, राइट दिस एंड देन वी विल बी डन। काफी सारे नाम हो जाएंगे। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तो आई होप याद करने की जरूरत भी नहीं है, राइट हर्षा? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा, देन वी विल डू द क्वेश्चंस। एक दो सवाल करेंगे फिर बाकी भी पढ़ना है। एटलीस्ट वी हैव वन मोर क्लास लेफ्ट फॉर आईपैक नॉमेनक्लेचर, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरा, एटलीस्ट वन क्लास, अगर एक से ज्यादा मिलेगा तो। डन? Done, sir. ठीक है, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप बताइए, कुछ है हमारे पास? टेल मी, डू वी हैव एनी फंक्शनल ग्रुप? No. No, sir. नो, राइट? सो वी विल राइट E. व्हाट अबाउट अनसैचुरेशन? No, sir. नो, देन वी विल राइट AN, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरेंट। सही है? Now Yes. we can write the parent like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Or we can go the other way around: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which one should we choose? The blue one or the green one? There's a blue one. Blue one, right? Because if we don't have what? We don't have numbering. We don't have functional group. Double bond we need, triple bond we need. So we have to see. We have to start from that terminal carbon which is nearest to the substituent, right? So obviously we have substituent, chlorine, bromine वगैरह substituent ही है. So this is going to be the blue one. Blue one से हम लोग start करेंगे numbering करना, ठीक है? So we have 7 carbon atoms. That is, it will be F. Now इतना हो गया आपके पास, बचा क्या है? क्लोरीन बचा है, और क्या बचा है? ब्रोमीन बचा है। इफ समथिंग इज लेफ्ट आफ्टर द पेरेंट अनसैचुरेशन एंड फंक्शनल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड डैश सब्स्टिट्यूएंट। सो सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाएगा आपके पास? यू हैव क्लोरीन एंड यू हैव ब्रोमीन, राइट? तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोरो। अब ब्रोमीन, इट इज इन द थर्ड कार्बन, 3 ब्रोमो, एंड क्लोरीन इज ऑल्सो ऑन द थर्ड कार्बन, सो 3 क्लोरो। अब नाउ व्हाट शुड वी राइट फर्स्ट? 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, दो नाम लिख सकते हैं हम लोग ना। आई कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए दो नाम हो सकते हैं, उसमें से एक चूज करना पड़ेगा हमको, है ना? 3 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो हेप्टेन, एक तो ये नाम हो सकता है, राइट? और दी अदर नेम कुड बी, देखिए वी कैन स्टार्ट विथ क्लोरो, क्लोरो 3 ब्रोमो हेप्टेन। अब बताइए विच वन शुड बी नेम? फर्स्ट नंबर होगा या सेकंड नंबर? एक आप बताएं, एनीथिंग 1 और 2 में से कौन सा हो सकता है? So one. वाई वन, हर्षा? Alphabetical order. हाँ ठीक है ना, मेक सेंस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। इफ यू हैव कंफ्यूजन, if you have more than one substituent, then the substituent are named in alphabetical order. पहले 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, हेप्टेन। आसान है, yes or no, please tell me, हर्षा and Martin. Yes. Try this one.
So can we start numbering from the functional group itself? Yeah, obviously. If the functional group is on the terminal carbon, we'll start from the functional group itself. Are you done, Harsha? Yes, sir. Can show the answer. तो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूट है ना अब? Yeah. Answer. हाँ. Done? Okay. Yeah. ये आप नंबर अपना मिथाइल, मिथाइल कहाँ पे, कौन से कार्बन पे मिथाइल? Third. What is the substituent? Tell me. The methyl, one carbon. And on which carbon atom? पेरेंट में कौन से कार्बन एटम पे, वो नंबर करना पड़ेगा ना, जैसे 3 क्लोरो 3 ब्रोमो किया हमने. Third, sir. ठीक है. So obviously functional group is CN, which is nitrile. Then you have unsaturation, which is nothing, so you'll write AN. The parent is going to start from this carbon atom, 1, 2, 3, and we will keep on going till the terminal carbon. So we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, and 5 carbon atoms in the parent, right? So we have 5 carbons, so it will be pent. If we talk about the substituent, here we have 1 methyl. This is a methyl group. We have a CH3 group, which will be methyl. Okay. Now we have to number it. So methyl is in the 3rd carbon atom, nitrile is in the 1st carbon atom. So the name would be 3-methyl. Just type it out. Pentane 1-nitrile. Now, obviously, you can name it like this also. 3-methyl pentane. अच्छा हाँ, यहाँ पे ना आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ठीक है ना? Just one thing. Can you name all the suffix of functional group, Harsha? Can you name all the suffix of functional group? Functional group में क्या क्या suffix आए हुए हैं? Start करेंगे वही acid से. Yes. Tell me. Oic acid. Oic acid. Sulfonic acid. Sulfonic acid. O8. O8. Oil halide. Oil halide. Amide. Amide. Nitrile. Nitrile. Al. Aldehyde. Yeah. On. On. All. All. Amine. Amine. Okay. So if you see, all the names of suffix, to be suffix hai, they are starting from vowel except for sulfonic acid and nitrile.
Can you see that? Yes. ठीक है. So please see. एक छोटा सा point है. This is just for the sake of English language. कि number के बाद if you are starting with something ना मतलब इस तरह से, so उससे पहले भी आपको एक इससे end करना पड़ेगा vowel. So I'm just going to write it down. If the name of suffix of functional group starts with a consonant, starts with a consonant, vowel से नहीं start हो रहा, किससे start हो रहा है? Consonant. Then add a. क्या आपको add करना है? A. The letter A. No, not A, my bad. E. To the name of unsaturation. ठीक है? वहां पे E आपको ऐड करना पड़ेगा unsaturation. So rather than writing trimethyl pentane 1-nitrile, you have to write pentane इस तरह से. और E यहाँ पे because it's starting with N here, I will write E here. है ना? So this will be 3-methyl pentane nitrile. ये हो सकता है because obviously if the number is 1, we can ignore the number 1, है ना? एक 1 को हम लोग ignore कर सकते हैं. There is a similar rule for the case of unsaturation. ठीक है? So if the name of unsaturation, unsat, starts with a consonant, then add a to the name of parent. ठीक है? To the name of parent. क्या मतलब इसका? जैसे कि मान लीजिए if you have something like this. You have seen this example, but हम लोगों ने इसको ignore कर दिया था. So here if you see, this is going to be E, and there is no functional group. Unsaturation will be di-en. Parent is going to be 4-carbon, which is bute, right? So rather than bute, because you can see the name of the unsaturation is starting with D, which is not a vowel. So rather than bute, we will write buta. Okay? So di-en, so it will be 1, 2, 3, 4. So it will be 1, 3. And the name will be buta. 1, 3 di-en. ठीक है ना? छोटी सी चीज है, you have to just remember it. I mean, this is just a rule that we have to follow. कि हर चीज जो end हो रहा है, that should be ending with, at least in the case of parent unsaturation functional group, either पहले वाला vowel में end हो या फिर अगले वाला vowel से start हो. ठीक है ना? So if we did not write, YN. sorry, हाँ, even for YN. YN, हाँ, even for YN. YN, अच्छा, but YN is like क्या बोलते हैं उसको? It is a pseudo vowel, right, हर्षा? Oh, जैसे okay. जैसे H होता है, H कॉन्सोनेंट है या फिर ये है, vowel है? Consonant, sir. हर्षा, कॉन्सोनेंट. But it is an honor to meet you, है ना? But it is an honor to meet you, right? Correct. So it is a pseudo vowel type का चीज होता है. तो उसी तरह से Y का भी जो कभी-कभी pronunciation होता है, it is like a vowel. So that is like pseudo vowel, है ना? Not in the case of Y. समझ में आ गया आपको? Yes. प्योर जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके लिए. अच्छा क्वेश्चन था वैसे, कभी से हमसे पूछा इसके बारे में. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन.